Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. I'm Rima Shaukat, and on behalf of Institute of Regional Studies, we warmly welcome Dr. Salma Malik. She is also member Board of Governors, Institute of Regional Studies. Today, she will be talking about the 76 years of Pakistan's journey after independence and how we see our position in South Asia. A brief introduction about Dr. Salma Malik. She is an associate professor at the Department of Defense and Strategic Studies, Quaid-i-Azam University, Islamabad, with over 25 years of teaching and research experience. She specializes in the areas of conflict and security studies and South Asian affairs. She is an alumnus of Uppsala University, Sweden, the Asia Pacific Center for Strategic Studies, Hawaii, and visiting research fellow, Sandia National Labs, New Mexico, USA. Besides being a member of IISS London, she is part of various regional and international fora such as RCSS, Regional Center for Strategic Studies, Consortium of South Asian Think Tanks, Social Sciences Research Council, WISCOM, and WDN USA. Prior to joining Quaid-i-Azam University, she has worked as research officer at the Institute of Strategic Studies, Islamabad from June 1996 to August 1999. Her number of publications also included an edited volume, Pakistan's Security Problems and Challenges in the Next Decade, RCSS Policy Studies, titled Small Arms and the Security Debate in South Asia. She co-authored USIP Mapping Conflict Trends in Pakistan, besides research articles in various research journals, book chapters, and monthly columns. She has also been on the visiting faculty list of the Intelligence Bureau Directorate, National Institute for Management, Foreign Services Academy, and has rendered lectures as a guest speaker at the National Defense University, Pakistan Air Force Air War College, Karachi, Naval War College, Lahore, as well as Command and Staff College, Quetta, NUST, and Fatma Jinnah Women University. She holds her PhD in International Relations from Quaid-i-Azam University. Over to you, ma'am. It sounds so funny now, honestly. I mean, वो जो बच्चे अपने लिए एक बनाते हैं तारीफी कलमात, तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं. So I need to actually notch it down. Thank you so much, Rima, for your very kind introduction, very thorough and kind introduction. It looks very impressive. Above all, thank you so much, Ambassador Nadeem Riasa, for this honor. When I was a student doing my master's at Defense and Strategic Studies, as several of our young students of DSS, mashallah, are doing their bachelor's and some maybe in their MPhil. So Institute of Regional Studies was one of the go-to places for all of us. It was one of the only institute of its kind which had the expertise in regional studies. And not only that, we had one of the most welcoming research body. We had very, very friendly library staff, those who could guide us in the research, and none of them were young people. They were much older, but they all could play a mentor to us, and we carried these wonderful memories with us. The added plus to Institute of Regional, a visit to the Institute of Regional Studies was that it was placed in a building that was right next to the only two cinemas, the good cinemas of that time, the Nactic Cinema 1 and 2. And they usually would have some cheesy movies there. And the basement of that cinema, Arish would very well remember, the basement of that cinema had a coffee shop जहाँ पेस्ट वाली कॉफी मिलती थी. तो हम लोग बस पे उतरते थे एंड ब्लू एरिया में फैल जाते थे और फिर आईआरएस पे जाते थे, कॉफी भी पीते थे, फिल्म भी देखते थे और घर वालों को लगता था कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. So with that, we saw, unfortunately, a bad phase through which many of our institutions have gone through. But IRS has been a very resilient institution. MashaAllah, it is so good to see so many young people flocking to IRS for their internship. And I think we owe everything to IRS leadership, Ambassador Nadeem Riasa, to the researcher staff, to the face that the IRS now has, the way you are progressing and everything. And I wish you people all the very best now and in future. When we look at the history of a country, before I get into my monologue, I would like to know
What do you people know about Pakistan? Today, when Pakistan has turned 76 years and a day, or actually many people say that it was actually the 15th of August that should have been the Independence Day to be celebrated. Pakistan did it on the 14th because it was 27th Ramzan thi, and we wanted to be slightly apart from the Indians and several other logistical and not so logistical issues. So, if I ask any one of you randomly, what is Pakistan to you? And I don't want the patriotic stuff. Pakistan, Meri Jaan hai, I love Pakistan, selfie points, and all that stuff. Um, from day one, 1947, 15th August, to today, what are the five key takeaways that you people would have, or if you're explaining it to a foreigner who knows nothing about Pakistan, आप क्या कहेंगे? वलीद, आप तो मुझे देखते हुए इसका शक्ल बताइए जैसे छुरी मेरे हाथ में और कुर्बानी का बकरा आप हैं, तो मैं आपसे तो नहीं पूछती, मैं आप उतनी देर तक दम ले लें. Anyone else? Can we have one of the young ladies telling us? चले 5 ना हो गए, 3 की पॉइंट्स हो गए कि आप किस तरह पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी को. We have to look at it from a very peculiar lens, and then we would understand the dynamics of Pakistan. As our young friend just said here, that Pakistan could have done much better. Usman said that it was a country made to safeguard the interest of one of the largest minorities, or the second largest population group, the Muslims of South Asia, and then the minorities. If we go by Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech that he made, and that's not how it has happened. Some of you said, Hassan said that it's actually an ideological state meant to protect the Muslims primarily, and so on and so forth, which is a bit at variance with what Osman has said. Then there is a very unique democratic or not so democratic tradition that Pakistan has, which again is very peculiar, unique to this country. Interestingly, or Javeria said, it's like an immature child, which still hasn't gotten grip or understood that it's turned 76 years old. And that's actually an age where many of the humans cross half of their life mark as such. So where does Pakistan stand? If we look at Pakistan from a lens of a country, 76 years is not a big deal, right? If we look at it from the lens of a human, that means that we have lived 3/4 of our life. If we take that from day one to day last, we are going to live 100 years. So we have gone past 75 years, and we're only left with 25 more years or 24 more years to go, which are going to be full of aches and pains, heart attack, diabetes, arthritis. So our performance is not going to be that well. And actually, that's how we are treating Pakistan, that it's like an aging individual, where sometimes bad governance is like an arthritic attack. Sometimes it has a high blood pressure. Sometimes the blood pressure goes down. But that's not how countries work. Countries have a very different way of living in it. Absolutely, this is true that Pakistan could have started on a very, very high pedestal, and we could have the graph could have gone higher and higher with time. Unfortunately, when we look at Pakistan, the ECG is very, at times it's not very erratic either, but it's an ECG which goes up and down. But that also shows that this person or this organism is very much a living organism, and it has its highs and lows, and it's not a flat-lined country in that regard. But within that ECG, if you're going by different scales, you're going by the different vents of this individual, then some of those ECG points are doing pretty well. Some are close to flatline, especially when it comes to economy. And that is something that we really have to look at as to why Pakistan's economy is not doing as well as other economies have done with countries of a similar age, of a similar maturity level, of a similar background. But please always keep in mind, no country is like any other country. Every country has its absolutely peculiar and unique dynamics.
When I teach my students, especially I teach conflict studies, so most of the time I say that when you're looking at conflict, or when you're trying to study a conflict, the same dynamics, the same antagonist, conflict actors, uh, meaning the same two countries, the same issue area, Kashmir, India and Pakistan versus on Kashmir, from decade to decade would have totally different dynamics. So you cannot think that what worked in 1948 would work in 65, what didn't work in 65 won't work in 71 or 99. So you have to really do your homework well to understand as to why we won or lost a battle with the same people, same actors, same predictable behavior. But then there's always some unique feature to every episode that you fight with the other country. Interestingly, when we look at this piece of land called Pakistan, today it is an overwhelmingly Muslim land. But when we look at Pakistan, it has been actually a crossroad of so many civilizations that it is mind boggling. In fact, one of the earliest civilizations of the world, which was the Mehergarh civilization. We usually trace our history to the Indus Valley civilization, or we trace it back to the Gandhara civilization, which is actually one of the youngest ancient civilizations. And that too is not young enough. But the oldest of the oldest, the grandfather civilizations, was the Mehergarh civilization, which doesn't even have traces in history. But there are no human fossils or human remains that indicate as to what the people of Mehergarh did. But interestingly, how many of you are here from Balochistan? Anyone? You are here from Balochistan. Absolutely. So if you happen to travel by the coastal highway, which luckily we were, courtesy Dr. Rima, lately, so we actually came across some old remains and some old reminders. Actually, we were not on the land of the Mehergarh civilization. Mehergarh civilization is a little more closer to Quetta and few places around Quetta. We were more towards the coastal belt, but that the coastal belt has the remnants of that area. And most of the ancient relics that we saw actually belong to much younger civilizations, actually Muhammad bin Qasim, and a century or more before that, and not younger, but not exactly the Mehergarh. But if you go to Quetta, if you happen to explore those areas, then you would find the remains of the Mehergarh civilization as well. The Mehergarh civilization technically had what we find out from those areas are um, the the pots and the pans and the tools and various other things that indicate that there was a thriving civilization and they had a good history. They were a very well endowed civilization, but unfortunately the humans didn't. This strip of land called South Asia also happened because there was this huge, gigantic geographic happening that brought this island towards another island, and they had a massive implosion, and the result was that South Asia became a permanent part of the larger area of Asia, and you had these mountains of which K2 and the 8,000s and all of those mountains came about. So there is a lot of fascinating history to this place. But please do believe me when I say that the Mehergarh people were not Muslims, right? Never have this illusion. It was only after the Gandhara, during the Gandhara time frame, that the Muslims started to come here. So when we look at the Mehergarh, no Muslims, 50,000 BC, there were no Muslims. Then came the Indus Valley. Again, there's a lot of history to the Indus Valley, but again, there are no Muslims here. There are a lot of other religions that are moving around this area. There are people like um, the Chandragupta Maurya dynasty and the Huns and Alexander the Great, and so many people coming here and putting their imprints. And there are a lot of imprints that we unknowingly carry with us when we look at that history of this area. And that is why we find Buddhas in Bamyan, which is now a very, very Muslim area. That is why we also find so many non-Muslim relics in and around us.
which we don't want to really believe, but still there are. And interestingly, what is now a very, very fascinating discourse and what is now a very in discourse, climate change, is something that has changed the mode of these civilizations as well. And my issue area that I work on, conflict, is also one of the reasons as to why there have been so many civilizations or people who have treaded these lands, this place. Who knows who was standing here? Perhaps Alexander was standing here and gazing into the place which is now the Quaid-i-Azam University and thinking, I should have a university here, or at least I should have a nice house here that overlooks not the Raval Lake at that time, but perhaps another water body or something of that sort. But definitely Peshawar, Texla were the favorite hangouts. Like Delhi became the capital of so many modern civilization. Not exactly, I wouldn't call them civilizations, I would call them the rules that happen. There is a Purana Delhi, Mughals का है, एक वो दिल्ली है जो आपको महाभारत में और रामायण में दिखाई देता है, कुरुक्षेत्र दिखाई देता है, फिर आपको मुगल्स का दिल्ली दिखाई देता है, आपको ल्यूटन का दिल्ली दिखाई देता है जो कि सबसे यंग एंड मॉडर्न दिल्ली है, आपको तत्तमश का और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दिल्ली दिखाई देता है, एंड दैट इज ऑल nestled in one city. So likewise Texila during these civilizational runs was a major converging point. It was a major civilizational point. And when we look at Texila, don't just look at the ruins of Texla as being the only point. What we are actually meaning is that entire area that surrounded Texla, but you majorly find the civilizational input there. So हमें जब हम civilizations को देख रहे होते हैं तो हमें कहाँ से इन चीज़ों का पता चलता है? कोई रिकॉर्डिंग करके नहीं जाता, तो हमें ज़्यादातर जब कोई आर्कियोलॉजिस्ट सिविलाइजेशंस को रिकवर कर रहे होते हैं, अमूमन कोई ना कोई अंग्रेज का कुत्ता ही होता है जो हड्डी निकाल के लाता है, तो पता चलता है कि इंसान की हड्डी है, मुर्गे की हड्डी नहीं है, और उससे फिर टेक्सला जो है वो डिस्कवर हो जाता है। मोहनजोदाड़ो भी कुछ इसी तरह की नॉट सो रोमांटिक नोशन से डिस्कवर हुआ। So we really don't want to go back to who discovered and how they discovered, but usually they were the British who did all this work, because unfortunately, this place, this cradle of civilizations over the centuries became one place which, when the British took over, they never really attributed that the brown Sahab or the locals had the intellect or they had the capacity to actually think or be successors or children of greater civilizations. So that is why for many of us, actually putting this mark that Mehergarh civilization and then Indus Valley civilization, Mehergarh is 7000 BC, Indus Valley is 2600 to 1900 BC, which has the Harappa and the Mohenjo-daro, or the Harappan civilization as we call it, as its key elements. There were 100,000 peoples living in these civilizational spaces, and these cities were 10,000 heavy cities, which is not a small number given how the human population was at that time. And when you go to Texla, or you go to Harappa, or you go to Mohenjo-daro, you find that these were extremely advanced city centers. And there have been several conspiracy theories as to how Mohenjo-daro or any of these civilizational areas became extinct. And then we find out that it wasn't the invaders, it wasn't a great war, but it was what we are talking about so much today. And again, I go back to the notion of climate change. The waters, the Indus River, which is an ancient river, remains where it does, although Indus ने भी अपनी जगह बहुत हद तक छोड़ी है, और हम जिन लोगों ने मैरीटाइम को थोड़ा बहुत स्टडी किया है, हम लोगों ने देखा है कि इंडस का जो रिवर बेड था वो बहुत हद तक मूव हो चुका है, and there's a fear that one fine day Indus might actually be creating its basin close to India. And we are not really protecting Indus the way we should protect Indus. But next to Indus, between Indus and another river called the Saraswati River, was the city or the city civilizational cradle of Texila. So टेक्सला के दोनों साइडों पे ये बड़े बड़े रिवर्स थे, एंड जैसे कि आप सबको पता है कि लोग पुराने जमाने में जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो रिवर वाटर्स के नामों से ज्यादा पहचानी जाती थी, एंड लोग जो थे ग्रेट रिवर्स के साथ उन civilizations को built करते थे, because that provided them with a lot of sustenance. So that river dried up.
And that is one of the reasons as to why Mohenjo-daro also became a ghost city. People left that city, they migrated to other areas. वहाँ से trade and commerce खत्म हो गया, and they left the city intact. So you don't find some kind of a bloody revolution that has ended those cities, but the very fact कि मौसम की तब्दीली, पानी का dry हो जाना, जो कि उस वक्त अगर ये हो सकता था जब हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर रहे थे दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बल्कि उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त का जो इंसान था, वो नेचर का बहुत फ्रेंडली था. He lived with the nature, he feared nature. So he didn't temper the nature too much because he realized कि अगर मैं नेचर के गॉड को टेम्पर करूंगा तो मुझसे खफा हो जाएगा. वो अनप्रेसिडेंटेड रेन भेजेगा, वो कोई हरिकेन भेज देगा, वो कोई फ्लड कर देगा. So I have to please the gods of nature. And I wish we were also a bit superstitious about these things in today's world, where we wanted to um, kind of empathize and make happy the lesser gods of climate and the environment so that we keep our human mother intact and all. So आपका जो सोहान रिवर है या रिवर स्वान है जो कि अब एक नाले में कन्वर्ट हो चुका है और उसके डीएचए के बीच में से एक छोटा सा रिक्रिएशनल नाला गुजरता है, तो ये सिविलाइजेशनल क्रेडल हुआ करता था. तो इस तरह हम लोगों ने नेचर को तबाह किया है माशाल्लाह, और हम लगे हुए हैं, हेल बेंट हैं कि हम मजीद इस चीज को खत्म करते चले जाएं. एंड इस इलाके में आपकी ग्लेशियल एजेस आई, 5 of them, interglacial ages आई, 4 of them. Glacial ages are akin to the ice age. Interglacial races जो हैं, they are the warmer weathers that there were. And then they have been times जब बहुत ज़्यादा rains थी, so the monsoon rain or the monsoon seasons which were years long. So ये डिपेंड करता है कि आप किस लेंस से किसी इलाके की हिस्ट्री देख रहे हैं. अगर आप क्लाइमेट लेंस से देख रहे हैं तो कैसे ये इलाका इवॉल्व हुआ है. अगर आप पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं तो ये इलाका कैसे इवॉल्व हुआ है. तो अगर हम पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग जो थे शुरू में लैंड के थ्रू इन्वेड करते थे. सी बेस्ड इन्वेजन्स बहुत कम थी, और यहाँ जो सिविलाइजेशनल क्रॉस ओवर्स होते रहे, सो वो इतने ज्यादा थे कि आई मीन देयर इज अ काउंटलेस लिस्ट ऑफ हाउ मेनी सिविलाइजेशंस हैव पास्ड दिस एरियाज. द पर्शियंस, ग्रीक्स, मोरियंस, इंडो ग्रीक, द बैक्ट्रियन एम्पायर, हंस यहाँ आए, कुशान्स यहाँ आए, तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं. और जो सबसे लेटेस्ट एंटिटी थी before the British took over in the colonial mindset were the Muslims. So Muslim rule जो है, हमने अपने बचपन से जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जी मोहम्मद बिन कासिम आए तो उनके पास कोई ऐसा सोलर लैंप था कि पूरे बड़े शहर में बत्ती रोशन हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं थी. मोहम्मद बिन कासिम एक बड़े लिमिटेड एरिया में आए थे, बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आए थे. There's one account of history that says 90 days, but it can't be 90 days because 90 days over the centuries is something very negligible. So he was here for not less than 3 years, which is the more popular account. And he fought war where he did. Muhammad bin Qasim did not come to South Asia to bring Islam. He actually came here because he was supposed to help out the people जो कि pirates ने capture कर लिए थे. और जो pirates थे उनको protection थी वहाँ के एक local हिंदू किंग की जिनका नाम राजा दाहिर था. हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें ये है कि वो बहुत ही ईवल एम्परर था और वो लोगों को खाने के तौर पे खाया करता था. कोई कैनिबलिज्म कुछ भी ऐसा नहीं था. He was just a normal human being, and he was as much an emperor as any other emperors have been. Muslim emperors भी कोई ज्यादा अच्छे emperors नहीं रहे. उन्होंने भी वही vices and virtues दिखाई हैं जो किसी नॉन मुस्लिम ने दिखाई है, बट हम लोग हर चीज को सिलेक्टिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री में ग्लोरीफाई बहुत करते हैं. So Muhammad bin Qasim, on the call of the besieged people by the pirates, was sent by his uncle, who was also the ruler of that area. And Hijaz bin Yusuf के कहने पे वो यहाँ आए, उन्होंने उसके साथ negotiate किया, negotiations fail हुई, उन्होंने फिर उसके साथ जंग की. And after a couple of battles and prolonged war, Raja Dahir was finally defeated, he was crushed, and Muhammad bin Qasim prevailed. And as a result of that, उन्होंने इस इलाके में जो भी इलाका उनके पास था, बदीन का इलाका ज्यादातर एट्रीब्यूट किया जाता है. सम पीपल इवन से
कि अगर आप कराची में चले जाएं तो कराची का देयर इज दिस स्मॉल आइलैंड जो कि नेवी के पास है, तो दैट वाज हिज एंट्री पॉइंट, बट दैट वाज नॉट, सो इट वाज मोर द बदीन एरिया एंड दैट्स वेयर ही लिव्ड। एंड दहेर की और ये वो सारे इलाके जो थे वो राजा दाहिर के किंगडम का हिस्सा थे। अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखते हैं तो राजा दाहिर हैज बीन ग्लोरिफाइड इन दैट हिस्ट्री and he has been considered to be a very just king. And of course, Muhammad bin Qasim is that demonized. And this is the modern post-Modi Indian history, where all of these Muslims have been demonized in another pattern. अगर आप 1980s या 1990s की इंडिया की हिस्ट्री देखते तो उसमें नरेशन इससे हट के थी, बट अब ये नरेशंस बहुत बदल गई हैं। बट मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ आके इस्लाम का पहला किला बनाना जो था, किला उन्होंने जरूर बनाया था क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो इस्लाम का किला बन गया था। तो चले फॉर पॉपुलर नरेशन हम उसको इसी तरह कह देते हैं। और माशाल्लाह उन्होंने फिर एक मस्जिद भी बनाई एंड मेनी पीपल seeing how the Muslims were behaving, so they embraced. The biggest catch point for the non-Muslims of this area to warm up to first the Muslims and then to the Christians when the British came here, or the Europeans came here. To be very honest, Europeans came here. The biggest drawing factor for the non-Muslims, mainly the indigenous population groups, was the caste system. Many of them were part of the four major caste system: the Brahmins, the Vaishya, the Kashtaris, and the Shudras. And then being a Shudra was also a good thing. At least you were the feet. There were many people who were not even the feet. They were the dirt under the feet. So they were the untouchables. They were the non-caste people. So anyone who was actually also a Shudra would look down upon those outcast people. And ये outcast people कौन से थे? ये वो थे बेचारे जो कि sanitary workers अभी भी इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ये जाते हैं और ड्राई सैनिटेशन। आप में से अगर कोई भी पुराने शहरों से बिलोंग करते हैं तो हमारे पुराने शहरों की जो हवेलियां थी जिनमें प्री ब्रिटिश घर बने हुए हैं, तो वहाँ ड्राई सैनिटेशन का सिस्टम होता था। और उसको कलेक्ट करने के लिए और उसको साफ करने के लिए वी वुड हैव पीपल हु वुड कम एंड डू दैट वर्क। और वो लोग बेचारे वही थे जो कि उस नॉन कास्ट सिस्टम से बिलोंग करते थे। And B.R.M. Raithworth was also one of those people. He got educated and then he raised the voice for these disenfranchised people, and then things went in a very different direction. So ये लोग वो थे जो कि बहुत ज़्यादा दूसरे रिलीजन्स की तरफ जो होली रिलीजन्स की तरफ थे उनकी तरफ फ्लॉक होना शुरू हुए, जिनमें मुसलमानों का जो रिलीजन था इस्लाम की तरफ बहुत सारे लोग आए। फिर इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी के लिए भी बहुत सारे लोग जो थे उस तरफ गए। सो हम अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी लुक एट मेजॉरिटी ऑफ आवर क्रिश्चियन पीपल, हम उनको गोवन क्रिश्चियंस कहते हैं बिकॉज वो यहाँ के लोकल्स हैं और उनके फीचर्स जो हैं वो हमसे जरा ज़्यादा डार्क स्किन्ड है और सब कुछ। एंड देयर इज अ हिस्ट्री एंड अ रीजन टू दैट, एंड दैट प्राइमरीली इज द फैक्ट कि ये बेचारे बहुत ही डिसएनफ्रेंचाइज्ड पॉपुलेशन ग्रुप्स के थे। और वो जो कास्ट सिस्टम हिंदुओं ने छोड़ के गए थे वो माशाल्लाह हम मुसलमानों में उतना ही वाफर मिकदार में पाया जाता है, बिकॉज हम लोगों ने भी सैयद्स एंड नॉन सैयद्स एंड मार्शल रेसेस वाला कॉन्सेप्ट लिया है। मार्शल रेसेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, ये ब्रिटिश ने बनाया। और मार्शल रेसेस में मैं भी मार्शल रेस में हूँ और मेरे जो बड़े थे वो बड़े फख्र से कहते थे कि जी हम मार्शल रेसेस में हैं। तो हमारे जैसे बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो हम अपने आप को समझते थे कि हमें कोई एक्स्ट्रा जीन है, जो कि अगर एक्स्ट्रा जीन हो तो आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है मेडिकल बेसिस पे। बट यहाँ एक्स्ट्रा जीन जो था वो आपके ईगो का एक्स्ट्रा जीन था। तो फिर आपने जब थोड़ी सी पढ़ाई की तो आपको पता चला कि आप ये किसी को ना ही बताएं कि आप में ये एक्स्ट्रा चिप लगी हुई है मार्शल रेस की, बिकॉज दिस इज अ ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट एंड दिस ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट वाज मेड अराउंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू हैव द लोकल्स एज पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्रोग्राम, जहाँ वो लोकल्स को रिक्रूट करते थे अपनी खातिर। और उन्होंने फिर ये देखा कि हमारा यहाँ जो रूल है लोकल्स की मदद के बगैर नहीं चल सकेगा, तो उन्होंने सब कुछ करना शुरू कर दिया। एनीवेज जी, हम थोड़ा सा फास्ट पेस करते हैं। रीमा आप प्लीज मुझे बता दें कि मेरे पास टाइम कितना है, वरना मैं तो पूरा दिन कहानियां सुना सकती हूँ। ओके नहीं, खैर ये आधे मेरे स्टूडेंट्स हैं, इतनी भी मेरे से मोहब्बत नहीं करते सो आप बता दीजिएगा, मेरी लोरियां तो खत्म नहीं होनी। ओके,
So, in between, one very important development that we need to flag, and you people know about it, and that is कि साउथ एशिया की जो लैंड है बाय एंड लार्ज छोटी छोटी किंगडम्स में बटी हुई थी एंड द फर्स्ट काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की जो बड़ी अटेम्प्ट है आफ्टर अलेक्जेंडर केम टू दिस एरिया और बस वो एक इलाके तक ही महदूद रहा था जेहलम मैक्सिमम वो जेहलम तक पहुंचा था एंड देन ही ड्रू बैक and we actually saw some graves and graveyards जहां हमने मोहम्मद बिन कासिम के सोल्जर्स की भी ग्रेवयार्ड देखा और हमने बलोची सिंधी डायनेस्टीज जो यहाँ थी क्लामती डायनेस्टी के भी ग्रेवयार्ड देखे जो कि कई जगह पे आप लोगों को सिंध में भी दिखाई देते हैं कराची के करीब भी हैं बदीन में भी हैं बट माशाल्लाह पसनी में भी वो पाए जाते हैं जो कि रीमा हमें खास तौर पे दिखाने लेके गई बिकॉज इन अ कपल ऑफ इयर्स टाइम वो ग्रेवयार्ड जो है वो रेत के नीचे आ जाएगा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा वहाँ हो रहे हैं सो वो दैट वुड बी टेकन ओवर बाय द क्रीपिंग सैंड ड्यून्स दैट आर हैपनिंग देयर but those are kind of a reminder of how these civilizations have outdone themselves. So there were several local civilizations. अगर आप सिंध की तरफ जाते हैं तो तालपुर डायनेस्टी को आप बहुत सुनते हैं क्लामती डायनेस्टी वगैरह भी थी इस तरह बलूचिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज रह चुकी हैं बट दीज वर लोकेटेड इन देयर पर्टिकुलर एरियाज जो बहुत बड़ी एक फर्स्ट कंसोलिडेशन ऑफ साउथ एशिया होती है विच वाज व्हेन एनीवन हैज एनी आइडिया कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने तकरीबन आज के साउथ एशिया की शक्ल बनाई मुगल से पहले मौर्य डायनेस्टी ठीक सो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने इन इट वाज अ हिंदू डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे हु वाज द पेट्रियार्क ऑफ दिस डायनेस्टी तो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया तकरीबन अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक उन्होंने लैंड जो थी in bits and pieces, not the entire of that, काफी हद तक एक लाइनियर पैटर्न में हासिल करते चले गए वो मलिक रियाज नहीं थे तो उन्होंने लोगों से लड़ झगड़ के और लोगों को मार पीट के वो लैंड हासिल की ठीक है सो लैंड हासिल करने का तरीका पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है बस थोड़े से टैक्टिक्स चेंज हो गए हैं Chandragupta Maurya himself had a very famous person who was his principal advisor, चाणक्य कौटिल्य चाणक्य कौटिल्य की किताब कौन सी थी अर्थशास्त्र ठीक है अर्थशास्त्र जो किताब थी मतलब क्या अर्थशास्त्र का एनी आइडिया अर्थशास्त्र को चाणक्य कौटिल्य को हम किस रेफरेंस से अमूमन जिक्र करते हैं कभी हम अच्छे अल्फाज में तो जिक्र करते ही नहीं है क्योंकि मुसलमान नहीं थे but what is usually our point of reference when we have to mention चाणक्य कौटिल्य एक्चुअली चाणक्य उसका नाम था चाणक्य का जिक्र करना होता है या शास्त्र का जिक्र करना होता है तो सेंटिमेंट क्या होता है लीडर्स की क्वालिटी इसके अलावा जी बेटा वॉर स्ट्रैटेजिस्ट ठीक है सो वो जो किताब थी रियल स्टेट स्ट्रैटेजीज लेसन इन रियलिज्म इसके मदे मुकाबिल कौन सी किताबें हैं जो आप लोगों के जहन में आती हैं संजू की आर्ट ऑफ वॉर आ गई बेचारे डीएसएस के विक्टिम्स जिनको ये 3-4 किताबें रटनी पड़ती हैं ठीक है और कौन सी किताबें क्लॉज़विट्ज़ की ऑन वॉर वेरी गुड मैकियावेली की द प्रिंस ठीक है ये 3-4 किताबें हैं और अगर आप देखें तो क्लॉज़विट्ज़ यूरोपियन माइंडसेट को दिखाता है ठीक संजू ओरिएंटलिज्म राइट and when it comes to चाणक्य कौटिल्य that is a South Asian mindset right but हम उसको कभी पढ़ते नहीं है हम हमेशा कहते हैं ये सारे हिंदू चाणक्य कौटिल्य के डिसाइपल्स हैं तो भाई तुम भी पढ़ लो यहाँ साथ वाले घर में टेक्सला में बैठ के उसने ये किताब लिखी थी उस वक्त तो बत्ती भी नहीं होती थी सोलर पैनल्स भी नहीं होते थे तो आप भी पढ़ लें but the very fact is that we also need to own up चाणक्य कौटिल्य because he was one of the principal forerunners of the Texla University. तो तक्षशिला की जो यूनिवर्सिटी थी
वो यहाँ ही पैदा हुए थे, यहीं बड़े हुए थे, और उन्होंने यहाँ प्रोफेसर एमराइटस का स्टेटस एंजॉय किया था, ये किताब लिखी थी. एंड इट्स बुक दैट नीड्स टू बी रेड. इफ यू वांट टू नो योर एनिमी, रीड हिज माइंडसेट. So that is something very important that you need to do. Okay, so Chandragupta Maurya, who is the patriarch of the Mauryan dynasty, उन्होंने यहाँ बहुत सारा conquest किया. Chanakya Kautilya, who was the father of hardcore realism, जिनकी ना सिर्फ ये किताब है, इसके अलावा इनके 2-3 ऐसे lessons हैं जो हम बड़े उर्फ़े आम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक टर्म है जब हमें चाणक्य कौटिल्य से वाकफियत नहीं भी थी तो हम इस्तेमाल करते थे. The friend of your enemy is your the enemy of your enemy is your friend, right? मैंने नहीं पढ़ी हुई ना, तो इस वजह से मैं friend कह रही हूँ. So the enemy of your enemy is your friend. So this brought us to the concept of mandalas. अगर आप कभी देखें, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने इंडियन ड्रामे ना देखे हो, तो इंडियन ड्रामों में वो कभी कभार एक आर्ट बनाते हैं, आर्ट ऑफ कलर्स है इनका, जो कि जमीन पे वो गोल दायरे में फूल और नक्शो निगार बनाते हैं. अगर आप कभी उसको गौर से देखें तो वो लेयर्ड है. देयर इज एन इनर लेयर एंड देन देयर इज एन आउटर लेयर, एंड वो बढ़ता चला जाता है. एंड एज बिग दैट आर्ट यू वांट टू मेक इट इज, इट कैन बी डन. ये होली दिवाली के वक्त किया जाता है. तो ये मंडलास हैं. सो बेसिकली व्हाट दे वुड से कि आपका इनर सर्कल क्या है, विच रिमाइंड्स अस ऑफ हैरल मैकेंडर, एंड आपका आउटर सर्कल क्या है, आपका हार्टलैंड क्या कहता है, और आपका रिम लैंड क्या कहता है. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? तो हार्टलैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिम लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट? टेक्निकली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने उनको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे उनका इंटरप्ले करना है. सो Kutelia would say these things. So this is not nothing that other people haven't talked about, but this is something that we need to understand, that you had very, very strong minds here who developed the civilizations and who influenced the civilizations. Unfortunately, over the years, the successes of the civilization have been very selective in choosing whom they want to believe and whom they don't want to believe. अगर हम मुस्लिम वे चाहते हैं, तो मुस्लिम वे में हमने नबी पाक के बाद और इमाम हुसैन की शहादत के बाद तो कोई भी मुस्लिम स्ट्रैटेजिस्ट अडॉप्ट नहीं किया. अगर वेरी फ्रैंकली आप मुझसे क्विज लें कि जरा इस्लाम के बड़े 4-5 स्ट्रैटेजिस्ट तो बताओ, तो मैं खुलफाए राशिदीन और हसनैन का तो बता दूंगी, बट इसके अलावा मुझे किसी का नहीं पता. बिकॉज हम लोगों ने अपनी मुस्लिम हिस्ट्री को कभी सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है, हमने उसको कभी ग्लोरीफाई नहीं किया, तो हमें वो भी नहीं पता और हमने ये भी नहीं पढ़ा. तो वी हैव रियली बीन एट अ क्रॉस रोड्स. मैक्सिमम जो हमने पढ़ा है, हम लोगों ने यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ा है, बिकॉज दैट इज द लेटेस्ट cultural overlay that we have adopted, and that's most convenient. ये बहुत छोटी सी हिस्ट्री है और इसको हम बड़ी आसानी से पढ़ते रहे. चंद्रगुप्त के बाद उसका जो बेटा था, he didn't create any major ripples, but he steadfastly held on to the conquest his father had made. और जितने अरसे वो रहा, उसने वो सारी लैंड प्रोटेक्ट की और उसको बहुत तरीके से निभाता रहा. So he didn't really become a very consequential name. But then the grandson, Ashoka, who later became known as Ashoka the Great, he was someone जिसने अपने दादा को भी 2 levels पीछे छोड़ा, सफाकी में भी और conquest में भी. Now, interestingly, Chandragupta himself became a Jain, जो कि थोड़ा सा जरा lesser version है warriors का. But when Ashoka came to power, तो उस वक्त जो साउथ ऑफ इंडिया था, जिसको किसी जमाने में हम हैदराबाद दक्कन के तौर पे जानते थे और अब वो तेलंगाना फिर से बन चुका है, तो तेलंगाना की जो स्टेट थी और वहाँ के जो रूलर्स थे, दिस इज काइंड ऑफ लाइक साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, दे वर अ वेरी फॉर्मिडेबल रूलर्स. और उस वक्त तक अशोका ने जितनी और छोटी मोटी कॉन्क्वेस्ट की, तो वो वहां तक नहीं पहुंच सका. सो ही सेट हिज आइज ऑन तेलंगाना. एंड जब वो वहां तक पहुंचे, एंड इवेंचुअली ही managed to take over Telangana as well. It's called the Battle of Telangana. So उन्होंने वहां इतनी सफाकी दिखाई कि at the dusk of that day, when he conquered the land, he stood on the battleground and he looked around and he found कि वो battleground तो सिर्फ लाल रंग की थी, लोगों के खून से. And it was very difficult to distinguish कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसकी अपनी आर्मी का बंदा कौन है और दूसरी आर्मी का बंदा कौन. And that is supposedly a turning point for Ashoka.
जिनकी लाइफ में उनकी जो खवातीन थी, चाहे वो उनकी कॉन्सर्ट क्वीन कॉन्सर्ट थी, उनकी बेगम थी, या जो भी खातून उनकी लाइफ में थी, जो इंडियन मूवी का वर्जन है उसमें तो बहुत ही उसको ग्लोरीफाई किया गया है चीज को. However, there was this great impact of the women in his life who did not like the level of atrocities and aggression Ashoka showed, and they kept on trying to school him कि आप थोड़ा जरा ज्यादा humane रहें. But of course, he was on this high horse of conquering the world. And after the Battle of Telangana, Ashoka turned back and he never fought another battle. And many people say कि Ashoka जो था वो he turned Buddhist after that. और यहाँ जो एक second layer of Buddhism आती है after the initial Buddhist religion making its mark, तो वो आपको दिखाई देती है अशोका की वजह से, जिसने बुद्धिज्म को फिर बहुत ज्यादा प्रमोट किया, उसने बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया, और उसकी जो सैंक्चुरीज थी, उसके जो रेलिक्स थे, उनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया. सो आपको फिर एक और लेयर दिखाई देती है. होते होते फिर हम देखते हैं कि देन कम्स द मुस्लिम्स, और फिर मुस्लिम्स की कॉन्क्वेस्ट शुरू हुई. हमारा जो हिस्ट्री है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ जितने भी गौरीज, गजनवीज, अल्ततमिश, ऐबक्स, दिस एंड दैट जितने आए, वो सब इस्लाम की टॉर्च पकड़ के आए थे. नहीं, वो सब यहाँ कॉन्क्वेस्ट करने आए थे लैंड की, बिकॉज इट वॉज अ ल्यूक्रेटिव लैंड. सोमनाथ का टेम्पल 17 दफा गजनवी ने, क्या गौरी ने, गजनवी साहब थे, महमूद गजनवी थे. So I would at times wonder, and I once even asked my teacher कि was he such a bad general कि उनको 17 अटेम्प्ट्स लगे एक जगह को, एक टेम्पल को कॉन्क्वेस्ट करने में. सो किसी ने हमें ये नहीं बताया था कि सोमनाथ इज लाइक अ ह्यूज स्टेट, इट इज नॉट जस्ट अ टेम्पल. सो वो 17 टेम्पल्स थे, वो वेरी रिच. सो माशाल्लाह हमारे रिलीजन्स में जो अब मुसलमानों को एक प्रॉब्लम हो गई है कि हम अपनी मस्जिदों को सोने के पानी चढ़ाते हैं, और हम वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात लगाने लग गए. तो हमसे पहले ये आर्जा हिंदुओं को भी लाहक था, सिखों को भी लाहक है, क्रिश्चियंस को भी था, जूस को भी था. हर रिलीजन में आपको इसी तरह दिखाई देता है कि लोग गरीब होते हैं और बिल्डिंग्स जो है वो बहुत अमीर होती हैं. सो सोमनाथ का भी जो टेम्पल था, वहाँ राम एंड सीता एंड ऑल दीज डाइटीज दैट दे हैड, सो उनके ऊपर हीरे जवाहरात की बारिश की जाती थी, एंड द टेम्पल्स वर वेरी रिच. And the prohets of those temples, who were the custodians of that richness, mashallah, were very corrupt. So corruption, richness, ये सारी कहानियां बिल्कुल नई नहीं है. ये जब से रिलीजन्स बने हैं दुनिया के, तब से ये चल रहे हैं. आप में से किसी ने मुझ पर ब्लास्फेमी लगानी है तो लगा दे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस्लाम का सच नाम ही नहीं लिया, मैं सिर्फ रिलीजन कह रही हूँ. सो वो सब कुछ होता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोगों ने देखा कि मंगोल्स भी यहाँ है, सेंट्रल एशिया का भी इन्फ्लुएंस आया. And then finally, the Mughals. The Mughals were a mix of several civilizations. And with the Mughals, eventually evolved a new language called Urdu, which technically is a Turkish word which says language, military's language, right? And wo Urdu evolve hote hote became a source of identity for the Muslims of South Asia, because the Muslims, or the Muslim rule of South Asia, was highly identified with the Mughals. The Mughals, especially Akbar and his successors till Aurangzeb Alamgir, did not rule India as Muslim rulers. They had a very secular bearing to them. And one point that a lot of Orthodox Muslims talk about Akbar is that he was not the perfect Muslim, because he brought दीन अकबरी, राइट, दीन इलाही जो जिसको हम कहते हैं, वो आईने अकबरी की बात करते थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे, दीन इलाही की बात करते थे, which was a code of secularism. However, how Muslim he was, that is something between him and Allah. So let's not go there, and I'm hardly a person who can comment on that. But one of his successors who is actually loved to hate by the Indians is Aurangzeb Alamgir, who was actually a very very orthodox Muslim. बट आलमगीर के ऊपर एक ब्रिटिश खातून है या अमेरिकन है जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने ये इंडियन मिथ को डीमिस्टिफाई किया है कि औरंगजेब वाज नॉट
that Dracula that the Indians have projected him out to be. He was very much a secular when it came to protecting the rights of the minorities or the non-Muslims of India. But the fact is that yes, he was a strong Muslim believer and he tried to expand Islam as much as he could under his rule. उनके साथ ये कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करते थे और वो जो थे टोपियां बना के अपनी अर्निंग करते थे। तो बराए मेहरबानी ये सारी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जरूर हॉबी के तौर पे टोपियां बनाते होंगे। सलमान द मैग्निफिसेंट भी ज्वेलरी बनाते थे जो आजकल आप लोग पहनते हैं, टर्किश ज्वेलरी। बट दैट डिडंट मीन कि सारी ऑटोमन एम्पायर उनकी ज्वेलरी मेकिंग के ऊपर बनी है। लाइफ इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्ट्रेंज। सो ये हल्की हल्की जो हमें रोमांटिक कहानियां हमारी टेक्स्ट बुक्स में दी जाती हैं, बड़े होके उनको तहकीक करके अपने जहन से बाहर निकाल दें। But in any case, once the Mughal rule was dwindling, came the biggest influence, and that was, and with the Muslims, another development that happened was that they brought maritime power to South Asia. The South Asian rulers, prior to the Muslims, especially the Hindus, did not, as per their religion, like the notion of stepping into open seas, the salty waters, because they would get contaminated and they had to be reclaimed to their religion. So हम जब राम सीता की कहानी सुनते हैं रामायण में, तो अमूमन ये बात की जाती है कि when Hanuman went and checked out that Sita was sitting under a banyan tree and crying her heart out कि राम कहाँ चला गया, so the Hanuman, the monkey god, came back and he told Ram, and a footbridge was created between the mainland of India and Lanka. And yes, there is a footbridge consisting of huge boulders and stone, which is now submerged under the water. But that is primarily because ये सारी जगह आपस में एक दूसरे से connected थी और टाइम के साथ वो स्कैटर हो गए, वो आइलैंड्स बन गए और अब पानी से वो जगह कवर अप हो जाती है। पर अगर आप कन्याकुमारी से श्रीलंका जाने लगे तो आपको वो रॉक्स दिखाई देती हैं। सो उस जमाने में पानी नीचे होगा, बाद में पानी ऊपर हो गया। सो हर चीज का एक लॉजिकल बेरिंग है। सो ही वॉक थ्रू दैट वाटर ब्रिज, reclaimed his queen and came back. But when we look at how the Muslims came here, so उन्होंने naval power use की। They were big traders and they were very innovative and they were very modern when it came to a lot of things. And after that, when the British came or when the Europeans came, तो फिर उस वक्त तक जो सी पावर थी उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत हद तक एक्सपैंड हो चुकी थी। एंड दैट इज वेयर यू फाइंड अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिटवीन द एम्परर्स हु वर सिटिंग ऑन द लैंड इन दिल्ली and those who had come from the seas, from the south. So unka jo mindset and the way they approached the land was very different. Those of you who live in Karachi, who have lived in Karachi, who come from Karachi, would find कि इस्लामाबाद के लोगों का टेम्परामेंट और माइंडसेट कराची के लोगों से या कोस्टल बेल्ट के लोगों से बहुत हटकर है, क्योंकि उसका एक माइंडसेट होता है। वहाँ एक आपको आज़ाद ख्याली का भी नोशन मिलता है, वहाँ सिविलाइजेशनल क्रॉस रोड्स होती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ताजर आते हैं। तो ताजिर अगर क्लोज माइंड के साथ आएगा तो तजारत नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से आपको हर इलाके की एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी मिलती है। अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान और इंडिया की बुनियाद 1947 में नहीं बनी, 1857 में भी नहीं बनी। हम लोग अगेन इसको थोड़ा सा हम डिमिस्टिफाई करते हैं। 1857 जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं, वो जंग आज़ादी मेरी नजर में नहीं है, बट आई स्टैंड करेक्टेड। आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, सो आई एम एब्सोल्युटली आई स्टैंड करेक्टेड फॉर दैट। बिकॉज 1857 में जिन लोगों ने जंग लड़ी, जिसको हम गदर कहते हैं या हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो जंग लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्केंटाइल कंपनी थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोकल्स की बेवकूफ़ी को कैश किया। जो वेलियंट लोग थे उनको डिवाइड एंड रूल किया, उनको मारा। टीपू सुल्तान, हैदर अली, सेवरल अदर पीपल, रानी झांसी। सिर्फ मुसलमान ही वेलियंट नहीं थे, नॉन मुस्लिम्स भी अपने इलाके के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव थे।
और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ जो था अपनी सल्तनत कायम कर ली। जिस चीज को हम कहते हैं कि जी समथिंग विच वाज सेक्रेट टू द हिंदूज एंड विच वाज नॉट अलाउड फॉर द मुस्लिम्स, द पिग मीट एंड द काउ फैट on the cartridges was a trigger point for a local discomfort which was brewing for the longest, जिसमें हिंदू भी थे, जिसमें मुसलमान भी थे, and they had this resentment against the British कि वो स्कूलों में हमारे बच्चों को लेके जा रहे हैं और वहां उनको आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, जो उनको स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश कहते थे कि जी हम तो इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, बट माशाल्लाह उनमें भी जो थे तबलीगी जमात होती थी ब्रिटिश क्रिश्चियंस की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को बताते रहते थे कि ट्रिनिटी क्या है और ये क्या है वो क्या है। तो बच्चे घर आके अल्लाह अकबर और है राम करने के बजाय जीसस द फादर द गोस्ट एंड द होली गोस्ट करके जब अम्मा अब्बा से बात करते तो चपेड़े भी खाते थे और अम्मा अब्बा परेशान भी बहुत होते थे। So eventually this sentiment that these British are slowly and gradually creeping into us got very strong and undercurrents चलना शुरू हो गए, जिनमें एक बड़ी मशहूर अंडरग्राउंड मूवमेंट है जिसको हम चपाती मूवमेंट कहते हैं। चपाती मूवमेंट क्या थी? कुछ लोगों ने उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया है कि किसी अंग्रेज के बच्चे को मार के उसका खून में आटा गूंदा गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। डोंट बी सो स्कैंडलाइज्ड। थे हम काफी सफाक थे, बट शायद कोई बच्चा बेचारा फौत हुई क्या और इस बहाने। बट ये था कि दे वुड नीड सम डो, और उसमें जितने भी जैसे यहाँ आप सारे बैठे हुए, तो मैं आप सबसे कहूंगी कि जरा थोड़ा सा प्रिक करके अपना फोन के दो कतरे टपका दें इसके अंदर, एंड दे वुड डू दैट, एंड देन दे वुड नीड द डो और उस से रोटियां बना। एंड लेट्स से ईच वन ऑफ यू रिप्रेजेंट a division or a city, and you would take that roti with you to that city, और वहां जितने आपके लाइक माइंडेड लोग हैं वो एक एक उसका निवाला लेते थे, एंड वहां आटा गूंदा जाता था और उसमें वो रोटी डाल दी जाती थी, और फिर उससे मजीद रोटी बनती थी, थोड़ा सा मजीद खून का डोनेशन जाती थी, और दिस वॉज अ अंडरग्राउंड मूवमेंट। सो ब्लड ब्रदर्स या फ्रेटर्निटी इन ब्लड थी कि हम अपना खून देने को तैयार हैं और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सो इस तरह की बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी। And in the cantonments, the resentment was getting higher and higher. More the local people were working with the British, the more they realized कि ये जो churches हैं, ये जो इनके schools हैं, convents हैं, ये they are a breeding ground for Christianity. So we have to change the dynamics. And as a result of that, another thing that the locals felt was कि ये जो मुसलमान आए थे, ये हमारी जैसी क्लाइमेट से आए थे, तो ये तो हार्ड हार्ड ब्लडेड हैं, ये हमारी क्लाइमेट को झेल जाएंगे। बट ये जो गोरा है, इसने तो कभी गर्मी देखी नहीं। आती सबसे पहले तो इसकी बेगम को गर्मी से पसीने छूटने लग जाते हैं, तो वो पंखा जलवाने लग जाती हैं, तो ये गोरा यहाँ बहुत अरसे रहेगा। सो अगर हम इसका एग्जिट एक्सपेडाइट करें तो नथिंग बेटर देन दैट। सो इवेंचुअली दैट factor with the 303 re-enfield rifles that expedited it all। और फिर आपकी कंटोनमेंट्स में म्यूटनी शुरू हुई जब ब्रिटिश, and please also believe that there were many British who were very logical, very level-minded, who also understood the local nuances, and they advised the British government against sending the Lee Enfield rifle cartridges, that these cartridges are going to create a lot of discontent amongst the local population, तो ये चीज यहाँ आप लोग ना भेजें। But because British, they were very very arrogant about everything, so they did what they did। सो 1857 की म्यूटनी हुई, 3 मेजर कंटोनमेंट्स में हुई, और फिर वो कैस्केड करते करते ऑल द वे अप टू दिल्ली चली गई। व्हेन द म्यूटनी एंडेड, इट वाज अ वेरी ब्रूटल म्यूटनी, जिसमें कोई ब्रिटिश खातून नहीं छोड़ी गई, कोई बच्चा नहीं छोड़ा गया, और उनको बहुत सफाकी से मारा गया। एंड वेरी फ्यू हैंड पिक्ड ब्रिटिश वर लेफ्ट, जिनको लोकल्स ने ये देख के कि हम इतने सफाक हैं, तो उनको अपने घरों में मदद की तरफ ठहरा लिया और उनको अपनी लाइफ की रिस्क पे ठहरा। When the news of the mutiny reached the crown, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व किया, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मेनी प्रॉब्लम्स, जिनमें एक बहुत बड़ा वायरस था
जो कि यहाँ से जा चुका था, जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, जिसने बहुत सारा बंगाल का और दिल्ली का जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो दौलत थी, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे कब्जा की थी। और बंगाल में जो एक बहुत बड़ा कहत पड़ा था, वो उसकी वजह से पड़ा था. सो देयर वर several bad examples that were created as a result of the East India Company, which was a mercantile company, और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोपगेट कर रही थी. और ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ब्रिटेन में भी बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस आए थे, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए थे, जिसमें जो नस्ली अमीर थे, नवाबजादे थे, वो गरीब हो गए थे, और वो जो कुछ भी नहीं थे, द स्कम ऑफ द अर्थ थे, तो वो क्विक मनी से न्यू बॉब्स बन गए थे, नौरजे अमीर ज्यादा बन गए थे. सो नाउ दे कुड परचेज कमीशंस, दे कुड डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू. So in 1858 the British Crown finally came, और 1858 के बाद यहाँ एक्चुअल कॉलोनाइजेशन हुई, और वो कॉलोनाइजेशन फिर 1947 तक चलती रही. सन 1917 में कांग्रेस का पहला वफद किया सोवियत यूनियन, जो कि उस वक्त तक बोल्शेविक रेवोल्यूशन, सॉरी 1990 में 19 में गया, 1917 के बाद, या 17 में गया और 19 में भी गया, जिन्होंने वहां जाके जो पोस्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन गवर्नमेंट थी उससे बात की. और इनका जो कॉमन एजेंडा था वो ये था कि जब अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो हमने एंटी इंपीरियलिज्म कैसे करनी है. और ये जो वफद किया कांग्रेस का, इसमें जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू और उनके जो लीग के बंदे थे वो गए. एंड बाय 1930s कांग्रेस जो पार्टी थी, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था just a couple of years before the 20th beginning of the 20th century as a political platform for the locals of this area, तो वो political platform के तौर पे यहाँ से बात करें और लड़ाई झगड़ा ना करें. सो उसमें उस वक्त सब होते थे, इंक्लूडिंग अ यंग लॉयर कॉल मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको बाद में उनकी बेगम की बहुत अच्छी दोस्त और एक कांग्रेस की लीडर सरोजनी नायडू, जो कि एक पोइट भी थी, तो उन्होंने उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का टाइटल भी दिया. सो मोहम्मद अली जिन्ना फॉर द लॉन्गेस्ट was in favor of coexistence, and he believed कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हमारे लिए आज़ादी हासिल करना आसान है. उनके बरक्स जब हम इलामा इकबाल को देखते हैं, तो इलामा इकबाल had this idea of a Muslim world, reclaiming of the ideal post-Ottoman Muslim world. He really had a lot of empathy and a lot of compassion for what the Muslims had lost as a result of the breakdown of the Ottoman Empire. So उनका जो एक कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म का, तो उसमें नेशनहुड का, so his notion was not exactly that of boundary based, border based state entities. So हम जो लाजे देखते हैं, जब हम वो उनकी मुख्तलिफ पोएम्स देखते हैं, तो हमें उसमें आइडिया यही मिलता है that he is talking about a Muslim world which is not based on borders. But then later on, again, we look at the same person who talks about the 1930 Allahabad address, and he talks about actually creating states, and that is how the thought process transformed. And if we look at the two nation theory or the state concept जो कि हमारे सामने है, तो उसमें हम हमेशा एक सवाल ये करते हैं कि जी, जो इलामा इकबाल का कॉन्सेप्ट था, या हम टू नेशन थ्योरी की जब बात करते हैं, तो ये तो फिर 71 के बाद सब कुछ अनडू हो गया. पर अगर आप बहुत लॉजिकली इलामा इकबाल वाले कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं, so he was pretty realistic when he said that I perceive the creation of two states on the planks of the British India, because obviously you cannot undo the entire India, snatch it away and connect the two countries. So he was looking at it in a very, very logical fashion. The fact that Muhammad Ali Jinnah eventually decided कि अब हमें वेज पार्ट करने हैं और हमें अब अपने मुस्लिम लैंड की बात करनी है,
उसके लिए भी हमें दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। एक, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो मुसलमान थे, एक्सेप्ट फॉर दोज हु वर फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम यूपी कहते हैं, और सब कुछ, यहाँ बहुत ज्यादा हम प्रोग्रेस नहीं करें। जो अलीगढ़ मूवमेंट थी सैयद अहमद खान की, जिनको हम सर सैयद अहमद खान कहते हैं, अगेन अगर इफ वी लुक और एग्जामिन द पर्सनालिटी ऑफ सैयद अहमद खान, तो शुरू में वो भी ये कहते थे कि जैसे एक हसीन दुल्हन का चेहरा होता है जिसमें वो पर्दे में होती है और उसकी दो आंखें खूबसूरती दिखाती हैं, उसी तरह हिंदू और मुसलमान में, ठीक। सो वो एक हसीन चेहरे की हसीन आंखें हैं और वो उसका हुस्न रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड देन द सेम सैयद अहमद खान ऑल्सो रियलाइज कि माशाल्लाह आफ्टर 1857 मुसलमानों ने तो प्रोग्रेस करना बिल्कुल खत्म कर दिया। And having these movements such as those by Deputy Nazir Ahmed and others, where they did talk about what the Muslims were doing. How many of the girls in their childhood have read the book Miratul Aruz? असगरी अकबरी की कहानी किसी को पता है? असगरी और अकबरी की कहानी। असगरी द यंगर वन, वेरी गुड, very hardworking, very proper, epitome of perfection. Akbari, the poor sister who does nothing well. आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ? आपने पढ़ा, लड़कियों ने नहीं पढ़ा? किस किस्म का आप लोग उर्दू में पढ़ते क्यों रहे? अच्छा जी, तो ये एक होता था, एग्जाम्पल दिया जाता था, और हमारी अम्माएं तो हमारे बचपन में हमें अस्करी और अकबरी बहुत कहती थी जब भी हमसे कोई काम गलत होता था। सो डिप्टी नजीर अहमद साहब एक he was a reformist who wrote a series of books. The initial one was Miratul Urus. उन्होंने बहुत कुछ और भी लिखा, पर जो पॉपुलर फिक्शन थी, then there was a Banatun Nash, यानी किचन में जो बच्चियां हैं वो, and then there was another book called Tawbatun Nasu, which talked about कि if you take the British way तो आप तबाही की तरफ चले जाएंगे, तो आपको तौबा करनी चाहिए, इस्लाम की राह में आना चाहिए, परफेक्ट मुस्लिम बन के अपने आप को राइज फ्रॉम द एशेज वाला करना चाहिए, एंड देन व्हेन यू रिक्लेम योर आइडेंटिटी, यू गेट इनटू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो फिर आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। एंड somewhat the same story with Akbari Asghari, Binatul Nash as well as Miratul Aruz. But having said that, मुसलमान फिर भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि उनके लिए ब्रिटिश वे जो था was the way of evil. Whereas for the Hindus, that was a moment of reckoning. They realized कि अब मुसलमान तो गए, ये तो नहीं वापस आने वाले। आखिरी जो बंदा है वो बर्मा में बैठा शेरो शायरी कर रहे हैं अपनी यंगेस्ट वाइफ के साथ। So there is no way that he is coming back. The British are going to stay here, but for a time being. This is our moment of reckoning, reclaim the land of our forefathers. So they started to work, and they started to work very hard. And I, for confidence sake, that मुसलमानों में और हिंदुओं में उसी वक्त जब तक अलीगढ़ मूवमेंट मैच्योर हुई है, हमें एक सेंचुरी का नॉलेज का गैप आया, ठीक। एंड वो जो नॉलेज का गैप है, हम अभी तक उसको रिकवर कर नहीं पाए, एंड दैट इज द मेजर इम्पेडिमेंट इन आवर डेवलपमेंट एंड आवर ग्रोथ टुडे फॉर द पाकिस्तानीज। अगेन व्हेन यू लुक एट द पॉलिटिकल मेच्योराइजेशन, जो आप बात कर रहे थे कि हम एक इमेच्योर बच्चा हैं और हम अपने आप को आगे नहीं लेके जा रहे, तो उसमें भी ये था कि बाय 1930s द कांग्रेस हैड एक्चुअली क्रिएटेड अ शैडो कैबिनेट, जिसमें हर एक को पोर्टफोलियोज अलॉट हुए हुए थे कि जब अंग्रेज जाएंगे तो किसने कौन सी मिनिस्ट्री रन करनी है और कैसे रन करनी है, तो वो सब कुछ भी वहां था। एंड फाइनली इन 1947, once India and Pakistan came about as independent countries, so बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जिनमें जिन्ना साहब को हम डिमोनाइज भी करते हैं, जिनको हम वैलिडेट भी करते हैं, उनको विंडिकेट भी करते हैं, जिसमें एक ये है कि जिन्ना को बहुत पावर लस्ट थी, और जब माउंटबेटन ने कहा था कि तुम मुझे गवर्नर जनरल रहने दो, तो जिन्ना साहब ने कबूल नहीं किया था। तो हम कहते हैं क्या हो जाता अगर वो कबूल कर लेते, हम भी तरक्की की राह पे चले जाते। तो उसका ये होता कि अगर कबूल कर लेते तो जितना थोड़ा मोटा कश्मीर हमारे पास आया है वो भी ना आता, और बहुत सारी चीजें जो हमने पीस मील हासिल की हैं तो वो भी ना हो सकती। सो दोज वर द प्रॉब्लम्स। When someone asked Mountbatten, if you had known that Jinnah was dying, would you have accepted 1947
14th August as the timeline, he said, not at all. Most probably, I would not have, right? So he had to see to it कि वो मुसलमान जो already अपने homeland में minority बनते चले जा रहे हैं when it comes to civil services, when it comes to politics, when it comes to economic life structure, तो उनके लिए एक मुल्क बनाना है. But it wasn't an ideological country. It was a country which was to provide what any of the minority population groups were not being provided in India of 11th August 1947 or 10th August 1947. So hence the Charter for Pakistan, for me, are those few paragraphs of Muhammad Ali Jinnah's speech that he makes on 11th August. And there's nothing more to that. Objective resolution, जिसको हम लोगों ने मौलाना मौदूदी और शिबली नुमानी और इन लोगों के पीछे बहुत ज्यादा जो था जो मौलाना उस्मानी थे उनके पीछे हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया. That was not what Muhammad Ali Jinnah's Pakistan was. But then that became, once you enter religion as part of this, Rima, should I wrap up now? बस ठीक है, बस मुझे 5 मिनट दें, I'll wrap it up. So उसके नतीजे में हमारे जो मुल्क में एक रिलीजियोसिटी की वेव चली है, आप उस वेव को हटा नहीं सके. Then religion became part and parcel of the politics. We can ask this question कि हम religion और politics को इकट्ठा क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि हमने religion को हमेशा political means को progress करने के लिए इस्तेमाल किया है. And when you manipulate religion, then the religion strikes back in a very, very bad fashion. शुरू के आपके जो decision makers थे, governor generals, the first few presidents, starting from Sikandar Mirza, Ayub Khan, Yahya Khan, they were not that much of an ideologue. Ayub Khan's martial law, to date, is considered by the grandparents' generation as the ideal martial law. But that kind of brought about this demonization of bureaucracy, this shifting of or inculcation of a culture that the military is virtuous and the civilians are not, the politicians are not. जो अयूब खान के टाइम पे 2-3 हम लोगों ने promulgations की ऑर्डिनेंस बनाए गए जिनमें सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी का ऑर्डिनेंस था, जिसमें और लोगों के लेजिस्लेटिव बॉडीज का अकाउंटेबिलिटी का ऑर्डिनेंस था. सो इन ऑर्डिनेंस ने वो एक बुनियाद डाल दी जिसमें ये फैक्टर हर एक के जहन में आ गया कि ये लोग करप्ट हैं एंड मिलिट्री इज नॉट. Any institution can be corrupt and no institution cannot be corrupt, right? So it's how you run that institution. How military remained above all of this conversation or narrative was because military, according to Hamza Alvi and Khalid bin Said, was one of those institutions which actually was over mature than the creation of the state that inherited it. So institutionally, South Asia jo tha, when it came to civil bureaucracy and the military bureaucracy, was a very well endowed space, क्योंकि ब्रिटिश उसको बड़ा इंटैक्ट छोड़ के गए थे. अगर आप कोई पुराना शहर देखें ब्रिटिश के टाइम का, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपैलिटी एंड कंटोनमेंट्स 3 मुख्तलिफ डोमेन्स होती थी और ये एक दूसरे से फिजिकली डिस्टेंट होती थी. एंड दैट काइंड ऑफ मार्क्ड देयर स्पेस, physical as well as not so physical. So ये सारी चीजें बीच में आती थी. And then since that first martial law, जो progressive martial laws आते चले गए, उसमें again legislative bodies का यानी politicians का और civil bureaucracy की accountability became a fashion. And for many of the people, civil bureaucracy को नीचे दबाना, उसको destroy करना बहुत जरूरी होता था because that is how the system worked. Military institution सिर्फ इसलिए बहुत intact हमारी रही है and overripe ho gayi because that has remained very protective and that's a very exclusive institution. And I'm really not giving any value judgments here, but we are just looking at it how from an institutional bureaucratic model. And where we stand today is how things are evolving. Thank you so much. Ladies and gentlemen, जहां हमने डॉक्टर सलमा को सुना, we have another
distinguished name in international relations, Professor Munis Ahmed. He is here from Karachi. Sir needs no introduction. मेरा ख्याल है सर जितना लिखते हैं, जितना इनका हिस्ट्री पे काम है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, स्पेशली जो आप एक अथॉरिटी कह सकते हैं कि 1971 के बाद से जो वाकयात, और उससे पहले भी और उसके बाद से भी सर का जितनी रिसर्च है उस पर आई गेस अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहें, सर को शायद इतना टाइम तो ना मिल सके बातचीत करने का, बट अगर आप लोग, आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इफ देयर इज एनीथिंग इन योर माइंड रिलेटेड टू 1971 और जो डॉक्टर सलमा ने बात की उससे, तो प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं एंड आस्क द क्वेश्चन, ट्राई टू बी लिटिल ब्रीफ ताकि हमें ज्यादा टाइम मिल सके. And it's basically a great opportunity to hear from, very interesting discourse. And Salma, she basically, what I have gathered, that she tried to focus on the historical dynamics of Pakistan movement and nation building and state building. In 1986-87, Dairy Dawn carried out a series of articles on the challenge of nation building in Pakistan. The problem is basically that we have not been able to understand who we are. There is a serious lack or dearth of ownership as far as the country is concerned, which was not the case 40, 50 years ago. The erosion of ethics and values and things like that. So briefly, I would like to, point out that India had the opportunity, Nehru as the Prime Minister for 18 years, stability. Second thing, that India abolished Zimedari system. Third thing, that India established institutions, governance, and in that setup, military had no role to play. So political parties, you can criticize Congress, you can criticize other parties. And finally, I would like to mention that my first visit was to India was in December 1985. And there was a conference, under 30 conference. I was at that time under 30, on peace, development, disarmament, international security by UNESCO at the India International Center. And I was amazed that the country, in Delhi, of course, so simple way of life that the ministers, the bureaucrats, even three-star journals, they were using ambassador car or Fiat car. There was no, soft drinks like Pepsi or Coke or 7-Up or Bubble Up. They had Thumbs Up, Limca, and Campa Cola. Same was the case with China, self-reliance. So therefore, India was able to, despite, and what you are saying about nation building, that it's a very classical, example that there are 28 states, I think, in India, and 7 or 8 union territories. How they have managed to. India has not lost an inch of its territory. In the last 76 years, it has gained, it has absorbed. And what Rajnath was saying, the Indian, defense minister, that now we have, if we get the third term, we will absorb गिलगित बल्तिस्तान. वो करें ना करें वो बात और है, मगर हमें ऑब्जेक्टिवली विद क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच चीजों को देखना पड़ेगा. वेयर व्हाट वेंट रॉन्ग एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, क्योंकि पहले हालात इस तरह के नहीं थे. पाकिस्तान वाज अ मॉडल of development. And I was reading that a delegation from Saudi Arabian airline visited Karachi 50 years ago to study how PIA has progressed. So it means that the erosion of values, erosion of ethics, and the criminalization of politics, corruption, nepotism, compromising on merit, that steel mill
इन 2008 में वो प्रॉफिट दे रही थी, नाउ नॉट एनी मोर। तो बाकी आप सबको पता है कि सलमा ने बात की थी कि नॉलेज फ्रेंडली, वी आर नॉट knowledge friendly society. And my book on the challenge of enlightenment, conflict transformation and peace in Pakistan, inshallah it will be out end of the year. The problem is our mindset, कि हमारा जो जहन है वो अभी तक इतना फ्यूडल ओरिएंटेड, इतना पसमानदा है कि मजहब को हर चीज में इन्वॉल्व कर देना, दैट इज नॉट, यू नो, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। तो जब तक इनलाइटनमेंट का, जिसको रोशन ख्याली कहते हैं, वो चीज यंग जनरेशन में खास तौर पे, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, हमने तो अपनी इनिंग्स खेल ली, लॉन्ग वे टू गो। तो जब तक हमारे यहाँ इनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं होगा, उस वक्त तक ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर मैं थोड़ा सा, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, बट अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ सर की बात को मैं रीइंफोर्स करूँगी कि जब पाकिस्तान बना उसके शुरू में हम लोगों ने टुवर्ड्स ड्यूरिंग द अयूब खान टाइम पीरियड 50s and 60s में दो चीज़ें हुई, जहाँ और इदारे बन रहे थे और सब कुछ, तो हम कहते थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आई है। अयूब के टाइम को ये बहुत ज़्यादा कहा जाता था। उसकी दो चीज़ें हैं, एक इंडिजिनस फैक्टर था कि पाकिस्तान में वाकई एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस हो रहा था, बट उसका साथ बाहर की जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थी वहाँ भी ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट्स थी जो कि उसको एनेबल कर रही थी। बट हैविंग सेड दैट, साथ साथ एक यंग इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक 5 साल इक्तिसादी मंसूबा दिया, एंड दैट यंग इकोनॉमिस्ट वाज मिस्टर महबूबुल हक, डॉक्टर महबूबुल हक, जो कि अगर आप आज देखें और अगर आप यूएनडीपी के डॉक्यूमेंट्स निकाल के देखें, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिबेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट्स में आपको एक वाहिद पाकिस्तानी का नाम दिखाई देगा हु वुड बी द लीड ऑथर, एंड दैट इज डॉक्टर महबूबुल हक। और उनके अंडर अप्रेंटिसेस में आपको एक नाम दिखाई देगा, दो नाम दिखाई देंगे वक्तन फवक्तन, अमिताभ आचार्य, और दूसरा आपको नाम दिखाई देगा अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन गॉट अ नोबेल, महबूबुल हक डिड। आप जो ह्यूमन सिक्योरिटी का डिस्कोर्स आज पढ़ते हैं वो महबूबुल हक साहब ने निकाला था। 5-year प्लान जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया PIA से लीड लेने आया, एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, फिलीपींस और एयरलाइंस एंड कैथे पैसिफिक, तीनों PIA ने बनाई, ठीक, एंड वी आर वेयर वी आर टुडे। साउथ कोरिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान था वो 5 years का, that was what they took from Mahbubullah. So Pakistan had a lead on nuclear science. डॉक्टर अब्दुल सलाम को हमने क्या किया, तो हम लोगों ने जब ये सेक्युलर स्पेस बनाई, जिना की सेक्युलर स्पेस को हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पॉलिटिकली रिलीजियसली रिंस किया, तो फिर उस दिन हमने पाकिस्तान को खत्म कर दिया, फिर हम उसके रेमिनेंट्स में रह रहे हैं। And then the institutional divide has been so strong, where the civil and the military both decided that we can walk parallel, we cannot walk together. तो जब तक हम पैरेलल चलते रहेंगे तो ये डिवाइड इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। सर जो बात कर रहे थे सेल्फ रिलायंस की, गांधी in today's India is not a very happy figure. People don't like him. Modi's India doesn't talk happily about Gandhi. But when it comes to Swadesh, home growth, and when it comes to Ahimsa, which is non-violence, तो जितनी भी वो वायलेंस करते हैं वो अपनी वायलेंस को कभी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के तहत सेल करते हैं, कभी कहते हैं बुद्धा स्माइल्स, कभी कहते हैं बुद्धा स्माइल्स अगेन, कभी कुछ और कहते हैं। सो इट्स हाउ दे मार्केट देयर मर्चेंडाइज। और अभी भी, बल्कि बस मेरे ख्याल में सर लेस देन 10 years हुए जब उन्होंने वो बड़ी वाली जो स्टील की गाड़ी है
उसको छोड़ा है, वरना पहले जितने भी इनके राष्ट्रपति थे, they would actually come in that ambassador, Indian ambassador, which was a steel on the road with wheels. And that was the symbol of national pride. और ये सारी चीजें उन्होंने बहुत पहले की है. सो अंडर नेहरू जो सबसे बड़ी बात है, जो सर ने भी बात की, वो इंडिया की unhindered continuity of politics थी. The vision with which India was created, the vision that Nehru had. Till 1964, that vision remained continued. 64 तक पाकिस्तान के तो मेरे ख्याल में 10 से ज्यादा top executives change हो चुके थे, if not more. And after that, especially Nehru had this vision कि उन्होंने how many of you have seen Oppenheimer? किसी ने नहीं देखी? Okay, so there's this person Philip Blackett in that movie जिसको Oppenheimer poison करने की कोशिश करता है. So he is the person जिसको नेहरू ने हायर किया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम ऐसे करते हैं, एक बंदे की तनख्वाह देते हैं, उसको यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें आप एक मिलिट्री इंडिजिनाइजेशन एंड प्रोग्रेस का मॉडल बना के दें. One person. They paid for him. He came and he did miracles for India. And हमारी selections उस वक्त गलत नहीं थी. Pakistan joining the American League, it was not a wrong decision, but we could have done better. हम हालात तक क्या है, बैड गवर्नेंस ना होती तो फिर हालात तक कैसे आते, पीछे रह क्या जाता है. अगर आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है तो आपकी पॉलिसी भी ठीक नहीं है, आपकी इंस्टीट्यूशंस का इंटरकनेक्टिविटी नहीं है तो आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है. ठीक है. अगर आप के अजीज ने एक किताब लिखी थी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, ठीक, जिसमें डिस्टॉर्शन जो हमने की हुई है वो है. However, having said that, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो नेशनलिज्म के प्रोजेक्ट में डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री नहीं करता. इंडिया ने भी डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री की, जिसका नतीजा गुजरात की शक्ल में सामने आया, जिसका नतीजा बहुत सारे जेनोसाइड की शक्ल में आ रहा है. इवन अमेरिकन्स डू दैट. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि वी अनफॉर्चुनेटली आर लिविंग इन द मोमेंट. एंड हमारा जो भी हुक्मरान आता है वो कहते पता नहीं कल कुर्सी हो के ना हो, तो मैं जितना अपना बॉक्स भर सकता हूँ मैं भर लूँ. सो जब तक हम सेल्फ ओरिएंटेड रहेंगे हमारे साथ ये प्रॉब्लम चलती रहेगी. और ये हमारा इंस्टीट्यूशनल वर्क रिलेशनशिप की वजह से बहुत है. द गवर्नेंस प्रॉब्लम इज देयर. One institution is way more mature and well endowed than the other institutions. मलिया लोधी साहब ने फिरोज हसन खान की किताब ईटिंग ग्रास का तबसरा करते हुए कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के लिए बड़ा स्टेडफास्टली, कोई भी हुकूमत थी, चाहे मार्शल लॉ की थी, चाहे सिविलियन थी, बेनजीर की थी कि नवाज शरीफ की थी, जिया की थी, स्टार्टिंग विद भुट्टो, जिया, बेनजीर, नवाज शरीफ, चारों हुकूमतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, बट एक चीज पे उनका इत्तेफाक था, दैट वाज अ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम. अगर यही इत्तेफाक, यही अज़म पाकिस्तान दिखा देता इकोनॉमिक्स को लेके, तो हमें कोई नहीं रोक सकता था. ठीक. सो ये चीजें हैं. हमने तो क्वाइद-i-आज़म का बेसिक वो जो 3 नुकाती प्रोग्राम है उसको ही अलग उल्टा करके रख दिया है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं. बट दीज थिंग्स आर देयर. Answer is clear to so many of us. And another thing that has left us way behind Bangladesh and India is education and respect for education and knowledge. जब तक हमें respect for knowledge और education नहीं आएगी, हम इसी तरह struggle करते रहेंगे हर शोबे में. Sir, आपकी राय. Yeah, I was there for a year as Asia Fellow, 2002. It's 21 years ago. A country which was called by Dr. Henry Kissinger, कि वो एक basket है with a hole, dependent on foreign aid and all. How there was turn around in Bangladesh. Dr. Muhammad Yunus, the Nobel laureate, founder of Grameen Bank, he was the one जिन्होंने वहां पे जो downtrodden लोग थे, millions of them, micro credit scheme, empowerment of women, garment factories,
अच्छा, ये चीज देखें कि जहानत जो होती है उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि बांग्लादेश इज नॉट अ कॉटन ग्रोइंग कंट्री, नहीं है, पाकिस्तान है। बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स $35 बिलियन ऑफ गारमेंट्स, जिसमें कॉटन इस्तेमाल होती है। वो कॉटन इंपोर्ट करते हैं कपल ऑफ $100 मिलियन की, उसको पे गारमेंट, विजिटेड गारमेंट फैक्ट्रीज इन ढाका एंड एल्सवेयर। तो ये चीज जो उन्होंने की वहां पे, एक मिरेकल एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो डेवलपमेंट, एजुकेशन, सेपरेटिंग चर्च एंड स्टेट, के मजहब को रियासत से अलग कर दिया। शेख हसीना, जो कि अपने नाम के साथ अब वाजिब नहीं लगाती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, क्लेवरली शी न्यूट्रलाइज द मिलिट्री। वहां पे भी मार्शल लगे हैं, वहां पे भी टेक ओवर हुआ फौज का। मगर क्या वजह है कि फौज जो है बांग्लादेश में इंटरफेयर नहीं कर सकती। खालिदा जिया, व्हेन शी वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 2003-2004, शी हैड अ डिसएग्रीमेंट विद वन ऑफ द आर्मी चीफ्स। उन्होंने, शी कॉल्ड हिम एंड फायर्ड। नवाज शरीफ की तरह नहीं कि जनाब आपने श्रीलंका से वो आ रहे हैं मुशरफ साहब, और उनको रास्ते में जो है आपने रिटायर कर दिया। तो फिर इसके अलावा होमोजेनिटी ऑफ कल्चर वो भी है। नेशनलिज्म, बांग्लादेशी नेशनलिज्म, बंगाली नेशनलिज्म। बंगाली नेशनलिज्म जो है वो अवामी लीग उसको वो करती है। बांग्लादेशी नेशनलिज्म जो है, जिसमें इस्लाम का भी एक थोड़ा सा वो आता है, वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन, हाउ दे कंट्रोल द पॉपुलेशन। 1970 में मशरकी पाकिस्तान की आबादी थी 7.5 करोड़, मगरबी पाकिस्तान की थी 6.5 करोड़, यानी वो 1 करोड़ ज्यादा थे, तभी तो उनकी 55% की पॉपुलेशन थी। अब बांग्लादेश की आबादी है 16 करोड़, पाकिस्तान की है 24 करोड़। मतलब उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने। अच्छा, फिर इंडिया ने उनकी बड़ी मदद की। आई हैव बीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, सिलट से लेके, जैसोर से लेके, कोमिला, चिड़गांव, राजशाही। तो जो बॉर्डर्स हैं, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं, वो 3 तरफ से हैं। और जो भी वहाँ पे जो कम्युनिकेशन या जो चीज़ें आती हैं, वो इंडिया से आती है। मोदी हैज़ डन कमेंडेबल जॉब, उन्होंने बड़े पैसे दिए। अब बांग्लादेश में ये सिचुएशन है दैट शेख हसीना इज ट्राइंग टू गेट 4th टर्म, बल्कि 5th टर्म। अवामी लीग फर्स्ट टाइम पावर में आई थी 1972 में, उसके बाद आई पावर में 1996 में, फिर 2014, 2019। तो वो तकरीबन 5वीं टर्म जो है वो कोशिश कर रहे हैं। एक और आखिरी बात मैं कहूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिटेन यू पीपल ओवर हियर, कि ये चीज़ होती है कमिटमेंट, ये होती है पेट्रोटिज्म। कि जायका, जापानीज कंपनी, उसने ऑफर किया था कराची में मेट्रो सिस्टम बनाने का, कि कराची में एक मेट्रो सिस्टम जो है बनाया जाए। जापानीज जो कंपनी जायका, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, दे गॉट डिसहार्टेंड। वही उन्होंने ऑफर की बांग्लादेश को, दे एक्सेप्टेड। अब ढाका में जायका ने मेट्रो ट्रेन जो है, एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क उनका वो बना दिया है। तो करप्शन उधर भी है, मगर सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक ने, दे रिफ्यूज टू फंड अ प्रोजेक्ट ऑफ अ ब्रिज ऑन पद्मा रिवर कनेक्टिंग राजशाही एंड अदर पार्ट्स, बिकॉज उन्होंने कहा कि भाई आप पैसे करप्शन कर रहे थे। तो उन्होंने, शेख हसीना ने फिर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके वो कर लिया, वो ब्रिज बन गया। तो नाउ बांग्लादेश इज कनेक्टेड बाय रोड, बाय ट्रेन। पहले तो फेरीज वगैरह चलती थी, ये सब होता था। तो इसलिए इश्यूज उनके भी हैं, बट हाउ दे हैव न्यूट्रलाइज्ड एज फार एज वायलेंस इज कंसर्न्ड। ये मेरे सामने तो ये होता था ढाका यूनिवर्सिटी में
कि हर रोज कोई ना कोई जलसा हो रहा है, कोई ना कोई जुलूस निकाला जा रहा है कुछ। अब ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स पैराडाइज। दे हैव engaged people in development, और खास तौर पे जो यंगर जनरेशन है। तो इसलिए 1971 का जो सारा सिलसिला था, वी थॉट दैट वो लाइबिलिटी हैं, दे आर लेजी पीपल, दे हैव एब्सोल्युटली, वो बैगेज है, विच इज प्रूव टू बी रॉन्ग। उन्होंने तो करके दिखा दिया कि हम, मतलब वी आर बेटर। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन, वी लैक फोकस। उन्होंने फोकस किया, डेवलपमेंट को फोकस किया, वुमेन एम्पावरमेंट को, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी नहीं बल्कि लिटरेसी को, और इसके अलावा टू कीप चर्च एंड स्टेट सेपरेट, जिसका आपने देख लिया कि मतलब द कंट्री एंड इट हैज एन इंटरनेशनल रिकग्निशन टू अ लार्ज एक्सटेंट। Thank you very much, sir. Sir, you want to have vote of thanks? Thank you so very much, Professor Dr. Salma Malik and Professor Dr. Mule Samer, for sparing your precious time and apprising us about some historical facts. And I'm sure they are going to go with us a long way. I thank you once again, all the interns over here. I'm sure जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं, आपके आगे आइंदा रिसर्च में आप इसको incorporate करेंगे. And looking forward to another productive session tomorrow, because हम कल पूरा पाकिस्तान के जो 76 years हैं उसके different phases के ऊपर we are going to have a roundtable discussion over. Thank you so very much once again, ma'am. Please join us for a cup of tea with the Researchers Cafe. Thank you. Thank you.